हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू डूइंग गुड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे विंडो स्क्रीन पर, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू मेक योर यूएसबी बूटेबल फॉर विंडोज़ 11. Okay, there are two ways that you can make your USB bootable. One is from original Microsoft website, and another is Rufus software that you can install in your PC and make USB bootable from there. Okay, so let's start, guys. First, if you want to make a USB bootable from the Microsoft original website, what you need to do is just go to your browser. Okay, I'll go to Google and then type Windows 11. Give me a second. Yeah, I'll just write it here. Download Windows 11. Download. Yeah, so you can see from here, there is this before you begin using the media creation, there is this creation tool that if you download this, and it can make your USB bootable. Okay, first I will tell you, I will download this one and start download. Okay, open, install. So yeah, it's ये अभी प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ही टाइम लेगा, ज़्यादा नहीं टाइम लेगा। ये डिपेंड ऑन योर पीसी इंटरनेट स्पीड। ओके, सो ये कुछ ये इनके लाइसेंस एंड टर्म्स हैं जो आप अगर रीड करना चाहें तो आप रीड कर सकते हैं। एंड देन प्रेस क्लिक एक्सेप्ट। ओके, जस्ट गेटिंग अ फ्यू थिंग्स रेडी। तो एज यू कैन सी हियर, ये आपसे पूछ रहा है कि सिलेक्ट योर लैंग्वेज एंड एडिशन. If you want to leave it default, if you want your language to be English and your edition Windows 11, just leave it like this. Or if you need to change your language, अगर आपने language change करनी है, कोई भी any different language that you want to choose, just uncheck this option. Use the recommended option for this PC. ये इसको आप uncheck करें, ठीक है। यहाँ पर आप लैंग्वेज पर आएँगे तो सारी लैंग्वेज आपके पास आ जाएँगी, जैसे जो कोई भी लैंग्वेज में आपने विंडोज़ डाउनलोड करनी है। तो मुझे ये यूनाइटेड स्टेट्स लैंग्वेज इंग्लिश में ही चाहिए, तो मैं इसको इधर इंग्लिश में ही रखूँगा, ठीक है। सो विंडोज़ एडिशन, इसका विंडोज़ 11 में देयर इज़ ओनली वन एडिशन। ओके, एंड देन प्रेस नेक्स्ट। हाँ जी, तो अभी ये पूछ रहा है आपको कि आपने इसको यूएसबी में रन करना है कि इसका आपको आईएसओ फाइल चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको यूएसबी में रन करना चाहता हूँ, ठीक है। यूएसबी में बूटेबल बनाना चाहता हूँ, तो आप अपनी यूएसबी को इंसर्ट करें, ठीक है। ओके, सो आई विल जस्ट प्रेस नेक्स्ट नाउ. ओके, देयर इज दिस. Okay, there are how many? Okay, give me a minute. Let me double check. Okay, I don't want to make this USB bootable. I'll insert another one, which is 64 GB. Okay, yeah, it's here now. I'll go back and then click next again and select this USB. Click next now. Okay, yeah. So let's see. Now it will take some time, but probably like half an hour to make your USB bootable. Which it's little, it takes a little time. Okay, but if you want, अगर आपको चाहिए कि आप if you want to make your USB bootable faster, then there is one software, a software that you can use to make your USB bootable, which is Rufus. I have that also. Okay, yeah. So this is the first step. ये पहला step है that you can make your USB bootable. Okay, ये पहला step है, and I will just cancel this because I don't want to wait more.
Okay, and then I will show you how to use that Rufus software. Okay, Rufus. Okay, yeah, there is this one, Rufus. Okay, I'll just click yes. ओके सो या हियर फ्रॉम हियर यहाँ से आपको अपना कोई भी एक जो आप विंडोज़ का इमेज आप राइट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करें। ठीक है, मेरे पास ये अभी विंडोज़ 11 का इमेज तो नहीं है, मेरे पास विंडोज़ 10 का पड़ा हुआ है। उसी को उठा लेते हैं। ये विंडोज़ 10 का मैंने सिलेक्ट किया, इसको ओपन करें। ये इसने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। ये मेरी ऊपर यूएसबी जो मैंने जिसको मैंने बूटेबल करना है वो शो हो रही है। ठीक है, ये अभी दिखा रहा है इमेज ऑप्शन कि स्टैंडर्ड विंडो इंस्टॉलेशन मतलब करनी है कि जिसमें आप वो करते हैं पार्टीशन वगैरह एंड ऑल द सेटिंग्स दैट यू डू एंड देयर इज दिस वन विंडोज टू गो। विंडोज टू गो इज दैट like once you install your windows in a hard drive। ओके, हाँ जी, तो विंडोज़ टू गो ये है कि जैसे आप किसी भी एक हार्ड डिस्क में अपनी विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं। ठीक है? वो हार्ड डिस्क आप निकाल के आप अपने दूसरे सिस्टम में लगाते हैं, तो वो उसी टाइम रन हो जाती है। ये इसका भी वही सिस्टम है, ठीक है? तो ये ये मैंने इंस्टॉल करनी है, मैंने पार्टीशन वगैरह मैंने रेडी करनी है, तो मैं इसको स्टैंडर्ड विंडोज़ इंस्टॉलेशन पे रखूँगा। पर ये देखें पार्टीशन स्कीम है, पार्टीशन स्कीम में ये जीपीटी और एमबीआर वगैरह आता है। अगर आप जीपीटी पे करेंगे, तो ये इसमें यूईएफआई जो लेटेस्ट पीसी में चलती है ओनली। अगर एमबीआर में करेंगे, तो ये जो पुराने सिस्टम है, उसमें भी चलेगी और नए वाले दोनों में चलेगी। बट मेरे पास तो नया है जीपीटी, मैं 12th जनरेशन पीसी यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें तो यूईएफआई वाली चलेगी। ठीक है, तो ये मैंने इसको सिलेक्ट किया है। उसके बाद आप इसको ऑल द सेटिंग्स आप यहाँ पे आप अपना नाम दे सकते हैं, कोई भी आपने अपनी यूएसबी का नाम देना है। मैं अपना नाम दे देता हूँ। ओके, आपके उसके बाद आपने क्या करना है, स्टार्ट करें। ओके, तो यहाँ पे कुछ ये ऑप्शंस हैं, ये आपने देख लेनी है केयरफुली। हाँ जी, तो ये यहाँ पे सारी आपने जो ऑप्शंस है ये आपने एक दफ़ा केयरफुली रीड कर लेनी है, जैसे भी आपको चाहिए। अगर आप यहाँ पे क्रिएट अ लोकल अकाउंट विद यूज़र नेम, वो यहाँ पे आप इसको राइट कर सकते हैं। आई मीन आपको उसमें दोबारा विंडोज़ में टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको ये देखना है, सेट रीजनल ऑप्शन टू द सेम वैल्यू एज़ दिस यूज़र। ये अगर आप ये करेंगे तो मतलब कि जिस पीसी में मैंने ये विंडोज़ यूएसबी बूटेबल की है, उस सेम वही सेटिंग ये यूएसबी में भी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं सारी सेटिंग्स दोबारा करना चाहूँगा। ठीक है, तो मैं ये प्रेस ओके करूँगा एंड देन ये आपको पूछेगा कि अगर आप ओके करोगे तो जो और जितना भी डाटा है ना वो सारी ये यूएसबी में डिलीट हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगी। तो इसको ओके करेंगे। ठीक है, वो देखें ये पार्टीशन डिलीट कर रहा है ना, पार्टीशन डिलीट कर रहा है। तो ये इतना को फास्ट नहीं है, बट इट्स बेटर देन द फ्रॉम मेकिंग ऑनलाइन। Rufus is way better than from that website. Okay. So, but it will still take around 10 to 15 minutes. Okay, start again. Okay, यार ये देखें अभी ये उसको उसमें उसका आईएसओ जो है ना वो राइट कर रहा है, उसको कॉपी कर रहा है उसमें। तो या दैट्स इट गाइस, सो दिस इज the easy way to make your USB bootable in Windows 10 or Windows 11. I hope you understand. Uh, For my next videos, please subscribe my channel and like my videos and comment if there's anything that you did not understand. For the meantime, bye bye guys. Thank you.